Assalamualaikum everyone, welcome to my new video. You can see I have a book of Oxford Primary Mathematics, second edition 1B. Okay, today we will study mathematics, which is worksheet number 1. We do this exercise today, so let's start the video. So we have a question is this: Priya has 16 chocolates. She eats 4 chocolates. How many chocolates does Priya have left? It means प्रिया के पास 16 चॉकलेट्स है, जिनमें से अगर वो 4 चॉकलेट्स खा लेती है तो उसके पास कितनी चॉकलेट्स रह जाएंगी. We can assume that these are the chocolates. Okay, these are 16 chocolates. Okay, उसने कितनी खानी है? 4 चॉकलेट्स. 1 2 3 4. ओके, अब रिमेनिंग चॉकलेट्स हमारे पास कितनी रह गई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 16 minus 4 equal to 12. Now Priya has 12 chocolates left. अब उसके पास कितनी रह गई हैं? 16 चॉकलेट्स थी जिनमें से उसने 4 खा ली हैं. अब उसके पास 12 चॉकलेट्स रह गई हैं. Priya has 12 chocolates left. And the second question is that Ahmed has 8 toy robots. He buys 3 more toy robots. How many toy robots does Ahmed have now? अहमद के पास 8 टॉय रोबोट्स हैं और उसने 3 टॉय रोबोट्स और बाय कर लिए. अब टोटल रोबोट्स उसके पास कितने हो गए? ठीक है, वी कैन अज्यूम दैट दीज आर द रोबोट्स. ओके, सो देयर आर 8 रोबोट्स एंड ही बायज 3 मोर टॉय रोबोट्स. ओके, 8 रोबोट्स उसके पास एंड देन 3 जो है उसने और बाय कर लिए. सो 8 एंड 3, 8 plus 3 equal to 11. It means Ahmed has 11 toy robots now. अब उसके पास कितने robots हो गए हैं? टोटल 11. Okay. Okay student, let's consider an example. I have 8 sticks. Okay, count them. 1 2 3 4 5 6 7 8. I have 8 sticks and I buy 3 more sticks. I buy 3 more sticks. Okay, now let's count them. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, I have 8 sticks and I buy 3 more sticks. Now there are total 11 sticks altogether. Understood? Okay, let's come to the next question, which is Mailing makes 12 paper flowers. City makes 7 more paper flowers than Mailing. How many paper flowers does City make? It means कि Mailing ने जो है वो 12 paper flowers बनाए हैं और City ने Mailing से जो है वो 7 ज़्यादा बनाए हैं flowers. Okay. सो अब ये पूछ रहे हैं हाउ मैनी पेपर फ्लावर डज सिटी मेक. सिटी ने टोटल फ्लावर्स कितने बनाए हैं? ठीक है, सो मिलिंग ने कितने बनाए थे? 12 पेपर फ्लावर्स. ठीक है, और सिटी ने जो है उससे 7 ज़्यादा बनाए हैं. ठीक है, तो 12 प्लस 7, यू कैन सी आई राइट ऑन द पेपर. Okay students, are you getting the point? Mailing makes 12 paper flowers and City makes 7 more paper flowers than Mailing. Let's consider an example. You have 5 chocolates and your brother has 3 more chocolates than you. How many more chocolate does your brother has? So 5 plus 3 equal to 8. Similarly, Mailing make 12 paper flowers and City make 7 more paper flowers than Mailing. So 12 plus 7 equal to 19. City makes 19 paper flowers. It means City ने कितने paper flowers बनाए हैं? 19. Okay students, the next question is this. Tom collects 13 leaves. Bala collects 5 fewer leaves than Tom. How many leaves does Bala collect? It means Tom ने जो है वो 13 leaves collect किए हैं और बाला ने जो है Tom से 5 कम collect करे हैं. It means कि Tom ने जो है वो कितने collect किए? 13 और बाला ने उससे
5 जो हैं वो कम कलेक्ट किए हैं। हाउ मैनी लीव्स डज बाला कलेक्ट, तो उसने कितने कलेक्ट किए। सो हम ज़रा काउंट कर लेते हैं। लेट्स काउंट दैम 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स 13 minus 5 equal to 8. It means Bala collect 8 leaves. Understood, class? Okay, students, you can see we have done all these questions. Question number 1, 2, 3 and 4. Inshallah, in the next video, we will discuss another questions. I hope you enjoyed this video. It will be helpful for you. Thanks for watching. Please like, subscribe and share my channel. Allah Hafiz.